जय माता दी दोस्तों। आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर कर रहा है भारत के 5 सबसे सस्ते शेयर। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब मेरा अगला वीडियो आए तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एक चीज बड़ी क्लियरली बाजार में कही गई है कि बाजार जो है ना, शेयर बाजार, इट कैन बी इम्पेशेंट, बट जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ना, उसको एक चीज मालूम है कि जो सस्ती चीज है वो सस्ती नहीं रहेगी, यानी कि जो चीप स्टॉक है वो चीप नहीं रहेगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं भारत के 5 सबसे सस्ते शेयर। तो जो पहला भारत का सबसे सस्ता शेयर जो मैं लेके आया हूं उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसका जो प्राइस है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ITFC First Bank stock is facing challenges due to consistent earning shortfalls and ongoing stress in its microfinance portfolio. The recent Q3 FY25 results were again disappointing, with profit after tax at just rupees 330 crore and return on assets at a weak 0.4%. The stress in the MF5 portfolio has led to lower margins and increased provisions. The MFI special mention accounts SMA pool increased from 2.5% in Q2 to 4.6% in Q3, indicating further near-term challenges. Margins are also under pressure due to interest reversals on non-performing assets and a lower loan-to-deposit ratio. Slower loan growth compared to deposit growth is also impacting investor confidence. Because of these worries, the stock is currently near its 52-week low, as investors were concerned about asset quality risks, slower growth, and uncertain profitability in the near future. Despite these short-term headwinds, IDFC First Bank's long-term outlook remains positive. The bank's non-MFI retail portfolio is performing well, demonstrating resilience despite wider concerns. Management anticipates that the MFI stress will reduce from early FY26, which should improve asset quality and profitability. Importantly, the bank's deposit base remains strong. This provides a solid base for future lending. Also, operating expenses growth is expected to slow down as investments in people, product, and technology are mostly complete. This should support operating profitability over time. In the past 5 years, from 2020 to 24, IDFC First Bank has achieved a compound annual growth rate of 17.1% in advances, while deposits have grown at 23.3%. The company has relatively clean balance sheet and is focusing on high margin businesses. It is confident of maintaining high margins in the future. अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का टेक्निकल चार्ट। स्टॉक इज गोइंग थ्रू अ करेक्शन और नीचे में 52 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये जो सपोर्ट है नेकलाइन का सपोर्ट भी है और नेकलाइन का सपोर्ट क्लियरली विजिबल है। तो ये था दोस्तों भारत का पहला सबसे सस्ता शेयर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आपके साथ अगला सस्ता शेयर शेयर करूं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हम इंट्राडे बीटीएसटी में सिर्फ निफ्टी पे फोकस कर रहे हैं। इन 3 वीक्स हमने 1000 प्लस पॉइंट्स कैप्चर करे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो हम बाय और सेल सिग्नल निफ्टी पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये एकदम डिफरेंट है। हमारा बाय सिग्नल आता है व्हेन मोस्ट आर फेयरफुल, और हमारा सेल सिग्नल और प्रॉफिट बुकिंग आती है व्हेन मोस्ट आर ग्रीडी। और अगर हमारे बाय सेल सिग्नल के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में, हमारी इंट्राडे बीटीएसटी सर्विसेज के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें ऑन 9560884223 पर, या व्हाट्सएप करें 9996161879। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं भारत का दूसरा सबसे सस्ता शेयर। इसका नाम है नेटको फार्मा। इसकी प्राइस आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। Netco Pharma has made a special place for itself in the pharma world, doing really well in generics, oncology, and complex medicines. Their first to file strategy in the US has been a big success, helping them get strong position in valuable products. This means they're often the first company to apply for approval to sell a generic version of a brand name drug, giving them a head start. With a strong pipeline full of specialized molecules, oligonucleotide, and biosimilars, Natco is ready for its next phase of growth. Even with all this, the stock is available at a good price. Its current price to earning ratio is 12, which is much lower than its 5-year average PE of 26.
Basically, the stock looks cheap compared to its usual valuation. The market is being careful because of ongoing losses in their crop science business and weak performance in domestic formulations. But the large amount of cash they got from G-Rev Limit, a cancer drug generic, has given Natco the resources to invest in high margin opportunities, including exclusive launches like Ozempic, a diabetes drug. The long term story looks good, supported by a healthy cash balance, a well defined research and development pipeline, and the ability to grow in segments with limited competition. While there are some short term worries, this could be a hidden opportunity. Between 2020 and 2024, Natco sale grew at a compound annual growth rate of 13.4% and net profit grew at a CAGR of 16%. The company's 5-year average return on equity is 16% and its return of capital employed is 13%. और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नेटको फार्मा का टेक्निकल चार्ट, और आप चार्ट पे देखें तो नतीजों के बाद एकदम से जो मेल्टडाउन है ना वो 13 फेब को ही शुरू हुआ है। एक बड़ा क्रैक चार्ट्स पे देखने को मिला है, स्टॉक गैप डाउन हुआ, नीचे गिरा है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन नीचे की तरफ है। फिर वही चीज है, खराब नतीजों पर एक करेक्शन का आगाज हुआ है। अब ये करेक्शन कितनी फर्दर डीपन होती है, कब रिवर्सल आता है, नोबडी नोज। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये करेक्शन फर्दर डीपन होती है, फर्दर पैनिक सेल ऑफ होता है, तो क्या आप नेटको फार्मा में स्कैटर्ड बाइंग करेंगे या सिप के माध्यम से निवेश करना चाहेंगे? अपना फीडबैक जो है कमेंट में शेयर कीजिए। आपको बताना चाहता हूं कि हम इंट्राडे बीटीएसटी में सिर्फ निफ्टी पे फोकस कर रहे हैं। इन 3 वीक्स हमने 1000 प्लस पॉइंट्स कैप्चर करे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो हम बाय और सेल सिग्नल निफ्टी पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये एकदम डिफरेंट है। हमारा बाय सिग्नल आता है व्हेन मोस्ट आर फियरफुल, और हमारा सेल सिग्नल और प्रॉफिट बुकिंग आती है व्हेन मोस्ट आर ग्रीडी। और अगर हमारे बाय सेल सिग्नल के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में, हमारी इंट्राडे बीटीएससी सर्विसेज के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें ऑन 9560884223 पर, या व्हाट्सएप करें 9996161879। तो दोस्तों, जो थर्ड भारत का सबसे सस्ता शेयर है उसका नाम है सोना BLW। इसका जो प्राइस है आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। Sona BLW Precision Forgings is a big name in auto parts, specializing in differential assemblies, gears, and electrical vehicle traction motors. While they cater to all types of vehicles, they're really focusing on electric and hybrid vehicles, creating high power EV systems and fuel efficient hybrid motors. Sona BLW EV revenue has grown a lot, from 14% in FY21 to 29% in FY24, and they're aiming for 50% in the next 2 years. It seems possible as EV projects made up 79% of their rupees 22,600 crore order book back in March 2024. To improve their technology, they acquired a Serbian company called Novilic for ADAS, Advanced Driver Assistance Systems, development using their own funds. The company has also allocated rupees 1,000 crore for capital expenditure over the next 2 to 3 years, showing their strong growth plans. However, the stock has faced some recent challenges. Weak demand in important markets like the EU and the US off-highway segment, and India's commercial vehicle sector is affecting growth. A slowdown in the EV shift, along with the model change at a key original equipment manufacturer OEM, has also slowed down revenue growth. Plus, an unfavorable product mix and a lower production levels have put the pressure on margins. Even with these short-term problems, the long-term story looks good. With 76% of its order book related to EVs, Sona BLW is well positioned to benefit from the ongoing move towards electric mobility. New project wins like a differential assembly for electric passenger vehicle in India show their growing presence in the EV space. Furthermore, their recent US $4 million investment in Clear Motion adds more diversification to their portfolio. As EV adoption speeds up and the company uses its global reach and strong customer relationships, Sona BLW is set for strong long-term growth. The business has grown very quickly. Between 2020 and 2024, the company's revenue grew at a compound annual growth rate of 36% and net profit grew at a CAGR of 38.7%. The 5-year average return on equity is 26.7%
and the return on capital employed is 27.9%. और अब आप सोना BLW का टेक्निकल चार्ट देख पा रहे हैं। टेक्निकली स्टॉक प्राइस इज गोइंग थ्रू अ करेक्शन, और एक चीज हम सब जानते हैं, करेक्शन कब खत्म होगी नोबडी नोस, कितनी डीप जाएगी नोबडी नोस, बट करेक्शंस की एक खास बात होती है कि वो जब एंड होती है ना, तो एंड होती है विदाउट गिविंग एनी वार्निंग सिग्नल्स। फंडामेंटल्स बढ़िया हैं। अब जीतेगा तो वो जो लंबी अवधि में करेक्शन के अंदर पेन के साथ डिप पे बाई करता है। आपको बताना चाहता हूं कि हम इंट्राडे BTST में सिर्फ निफ्टी पे फोकस कर रहे हैं। इन 3 वीक्स हमने 1000 प्लस पॉइंट्स कैप्चर करे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो हम बाय और सेल सिग्नल निफ्टी पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये एकदम डिफरेंट है। हमारा बाय सिग्नल आता है व्हेन मोस्ट आर फियरफुल, और हमारा सेल सिग्नल और प्रॉफिट बुकिंग आती है व्हेन मोस्ट आर ग्रीडी। और अगर हमारे बाय सेल सिग्नल के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में, हमारी इंट्राडे BTST सर्विसेज के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें ऑन 9560884223 पर, या व्हाट्सएप करें 9996161879। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं भारत का 4th सबसे सस्ता शेयर, जिसका नाम है IGL, यानी कि इंद्रप्रस्था गैस। प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। Indraprastha Gas is a major player in the city gas distribution, supplying compressed natural gas and piped natural gas across the national capital region. With a strong hold on the market, long-term gas supply agreements, and no debt, the company has benefited greatly from the move towards cleaner energy. As car and commercial vehicle makers are pushing CNG models, IGL is growing its infrastructure, adding more refueling stations and increasing compression capacity. Despite this, IGL stock has faced market pressure, dropping 24% in 6 months. It's currently trading at a price to book ratio of 3, a 35% discount compared to its 5-year average PB of 4.7. This drop is because shrinking margins and sudden policy changes have worried investors. The October-November APM gas cut forced IGL to use more expensive liquefied natural gas, which squeezed CNG margins. Price increases offered some relief, but with elections coming up, passing on cost in politically sensitive Delhi was difficult. At the same time, uncertainty about gas allocation policies and rumors of GST inclusion added to the selling pressure. Even after the partial return to APM gas at 51%, recovery won't happen overnight. However, the long-term story remains positive. IGL is expanding its CNG and LNG network, investing heavily in cleaner transportation. Being debt-free and steadily growing its infrastructure ensures it stays well-positioned. If the company manages to gas mix effectively and implements pending price hikes, margins could recover by FY26. At a 35% discount to its 5-year average PB, IGL's stock price suggests its best days are over. But with consistent volume growth, a dominant position in the NCR, and structural demand tailwinds, the market might be underestimating its recovery potential. The business has performed well. Between 2020 and 2024, its revenue grew at a compound annual growth rate of 19.3%, and net profit grew at a CAGR of 18.6%. The average return on capital employed is 28.1%, and the average return on equity is 22.9%. और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं IGL का टेक्निकल चार्ट, जो कि बहुत बुरी तरीके से डिस्टॉर्टेड है। चार्ट देख के तो डर लगता है, बाय ऑन डिप्स करते हुए घबराहट आती है, मुझे डर लगता है। अब एक कहावत भी है, डर के आगे जीत है। मुझे तो चार्ट देख के काफी डर लगता है, और एक चीज हम सब जानते हैं, डर के आगे जीत है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप मेरे डर का कॉन्ट्रा करोगे? क्या आप IGL को डिप पे बाय करोगे? अपना जो फीडबैक है कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आपको बताना चाहता हूं कि हम इंट्राडे BTST में सिर्फ निफ्टी पे फोकस कर रहे हैं। इन 3 वीक्स हमने 1000 प्लस पॉइंट्स कैप्चर करे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो हम बाय और सेल सिग्नल निफ्टी पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये एकदम डिफरेंट है। हमारा बाय सिग्नल आता है व्हेन मोस्ट आर फियरफुल, और हमारा सेल सिग्नल और प्रॉफिट बुकिंग आती है व्हेन मोस्ट आर ग्रीडी। और अगर हमारे बाय सेल सिग्नल के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में, हमारी इंट्राडे BTST सर्विसेज के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें ऑन 9560884223 पर, या व्हाट्सएप करें 9996161879। तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 5th एंड लास्ट भारत का सबसे सस्ता शेयर, और इस शेयर का नाम है बर्जर पेंट्स।
प्राइस जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। Berger Paints is a top paint company in India with 80% of its earnings coming from decorative paints and 20% from industrial paints. A strong player in the coatings business, the company has consistently grown its retail network and strengthened its market presence with over 25,000 dealer partnerships. Even with the inflation and a long monsoon season, they held their ground, especially in decorative paints, where strong volume growth in affordable paints helped balance out pricing issues. However, they have faced some difficulties as earnings have gone down and demand remains uncertain. The entry of Grasim Industries and other big players has shaken up what was once a market dominated by a few companies, putting pressure on pricing and margins. But Berger is no stranger to competition. Their strong distribution network, brand value, and operational know how have helped them to overcome competitive challenges in the past. Currently, the stock is trading at a price to earning ratio of 48, which is a 31% discount compared to its 5-year average of 71. This shows the market is considering the short term challenges. However, the long term story remains positive. As the industry becomes more consolidated, established players with a strong infrastructure will be in the best position to take advantage of growth opportunities. With rising disposable incomes and increasing urbanization driving consistent demands for paints, the companies that can adapt to changing consumer preferences, digitalization, and sustainability trends will come out stronger. From 2020 to 2024, Berger's Paints sales and profits have shown good growth with a compound annual growth rate of 12.9% and 18.8% respectively. The average return on capital employed is 28.7% and the average return on equity is 23.3% over the same period. और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बर्जर पेंट का टेक्निकल चार्ट, नीचे में 435 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आप देखो जितनी बार सपोर्ट के पास आया है, जो होता है ना स्मार्ट इन्वेस्टर, उसने खरीदारी करी है। अब ये सपोर्ट गोइंग एट रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता, आगे टूटता है तो नोबडी नोज, बट एज ऑफ नाउ 435 नीचे चार्ट्स के ऊपर एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। और स्मार्ट मनी मतलब कि बड़े निवेशक ने, एचएनआईज ने इस लेवल्स के आसपास जब ये स्टॉक आया था तो खरीदारी करी है, ये चार्ट देखकर भी पता चल रहा है। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर करे भारत के 5 सबसे सस्ते शेयर्स। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कैसा लगा आपको हमारा कंटेंट? अपना फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future returns.